Cl के केस में Cl की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है that's I say it's got many oxidation states. It can form many different different number of bonds. So for example, the first one, even up the bond. So you Cl is the outer electronic configuration is 3s. So that's 3s2. 3px is also 2, and 3py is also 2, and you've got 3pc, which is 1. Cl normal condition mein though it's going to form or it's going to just do one overlapping, okay, because all the other orbitals are full. Uh, but Cl has one electron that's needed in the 3pc. Okay, so that's -1 oxidation state, -1 or +1, depending on कौन ज़्यादा electronegative है. Achha, but Cl can expand its octet. What it can do is, because there's a completely empty d subshell also in the third shell, so 3dxy खाली पड़ा है, 3dyz खाली पड़ा है, ठीक है, 3d xz that's also empty, right? So it's got a number of spaces that are available, ठीक है, and so on. It's 3d पूरा का पूरा that's empty. So what can happen is that there could be another electronic configuration of Cl which would be an expanded octet, कि जिसके अंदर अच्छा उसके अंदर क्या होगा कि उठा दें. अच्छा, so Cl in this expansion, instead of having two electrons over here, it can have just one electron over here, keep one over here, और एक को वो आगे भेज दे खाली जगह पे, ठीक है. So now what will happen is that that it can have three bonds. 3py can form overlap with another atom, 3pc can overlap with another atom, 3dxy can also overlap. All three of them need electrons. So that's a +3 oxidation state. इससे भी ज़्यादा expand कर सकता है. What it can do is it can send in electron. अच्छा, वो send नहीं कर रहा. It's the other atom that are pulling electrons, right? कि अगर तो तीन atoms है ना, तो जैसा phosphorus था, it was only making 3 bonds. But if there are 5, so the 5 atoms will come in and they will start pulling electrons in different directions. तो वो electrons को distribute होना पड़ेगा in the outer shell, ठीक है? So it's not the Cl that is deciding कि भाई मेरे electrons distribute हो जाए. It's the other atoms that are deciding to distribute the electrons, because there is space available in the outer shell. So the electrons can get distributed. So Cl can actually send another electron from the 3px and send it to 3dxe, right? So that's Cl making 5 bonds now. And Cl can also make 7 bonds. Okay, it can expand its octet further. Okay, the 3s electron can also, so the 3s electron can also expand, and there's one electron that's sent to the empty orbital, which is 3dxe, and that is +7 oxidation state. Okay, +7 का मतलब ये कि it's making, this one is I think +5, and so you've got +3 over here. The first one is +1 or -1, right? So it can have multiple oxidation states, but it requires more and more energy to expand octets. Remember this as well. कि मुश्किल काम है ना, कि पहले क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोशिश होगी कि it's going to be as close to the nucleus as possible. So the other Cl atoms, when they are, I mean, for example, phosphorus का जो case है ना, to distribute the electrons further, the Cl atoms have to come in and they have to like pull the electrons. So it kind of takes energy to actually distribute the electrons. क्लोरीन के साथ भी यही होगा कि अगर वो 7 bonds बना रहा होगा ना, like ClF7, right? Like if you look at ClF7 molecule shape, तो
Okay. Iodine F7 है जिसका ठीक है. So it would require a lot of energy from the other atom to distribute and pull the electrons in different directions. Is this idea clear that octet expansion requires energy? Is that clear? जी सर. कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके ना डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रीजन्स में पुल करे ठीक है सो दैट अट्रैक्शन हैज टू दैट एनर्जी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर अच्छा तो रियलिटी ये कि सीएल एक्चुअली ऑक्टेट एक्सपेंशन करता नहीं है मतलब not a lot like if you look at the oxidation states of Cl uh, okay chlorine वैसे ही सर्च कर लेते हैं Wikipedia अच्छा if you look at the chlorine Wikipedia page तो उसकी जो maximum oxidation state है ना have they given us oxidation states common oxidation states is +1 +2 +3 +5 ठीक है और +7 ये वही है +6 +4 +2 ये थोड़ी अनकॉमन है ठीक है तो it is +3 +5 and +7 these are the common ones it's making 7 bonds but remember Cl के लिए it's going to be harder because a smaller atom what will happen to a smaller atom जो है ना मतलब ClF7 की शेप नहीं आई आयोडीन की आई है फॉर स्मॉलर एटम Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो इट विल नॉट अलाउ फ्लोरीन टू पुल द इलेक्ट्रॉन मतलब उसका जो आउटर शेल के जो ऑर्बिटल्स है ना उनको तोड़ के ना वो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल it won't allow fluorine to do that. Iodine will. It would be a lot easier for iodine to actually do octet expansion. ठीक है तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं ये पॉइंट क्लियर बात समझ आइए कि octet expansion is a lot easier for bigger atoms compared to smaller atoms. Is that clear? जी सर. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि octet expansion is easier for bigger atoms it's easier for bigger atoms. Why is it easier for bigger atoms? Because they don't attract electrons that strongly due to greater shielding. So due to greater shielding. और उसमें ये कि they don't attract electrons strongly due to greater shielding and one other thing is so more energy is needed or less energy sorry बड़े आटम को less energy चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो जिसको जिधर खींचना चाहेगा ना मतलब फ्लोरीन आएगा इसके इलेक्ट्रॉन को जहां मर्जी खींचना चाहेगा ना जिस मर्जी ऑर्बिटल में इट विल ट्राई टू पुल इट द इलेक्ट्रॉन विल गो इट्स गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड if it's got 7 electrons all 7 electrons will occupy different orbitals ठीक है they'll get distributed instead वो पहले क्या था वो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे जमा हुए हुए थे एक जगह but now they will get distributed very very easily so strongly due to greater shielding and less energy overall needed for octet expansion So जो छोटा atom है ना, the first one, the smallest atom, like nitrogen, it doesn't even expand its octet. Why? Because nitrogen का मसला है कि उसको जगह ही नहीं है outer shell में. वो अपने इतना छोटा outer shell है कि वो उसको distribute ही नहीं कर सकता electrons को, right? तो nitrogen के पास जगह का मसला है कि there's no empty space available. Chlorine's got a bigger shell and it can expand its octets. It can distribute the electrons in different orbitals because it's got a lot of low-lying empty d orbitals,
low energy orbitals. So ये clear है? Octet expansion वाला part सारा clear है? Is this part clear? जी सर. और एक चीज रह गई है which is अब हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं. पहले मैं समरी लिख देता हूँ. हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. There three. Remember, you got 4 electrons. Carbon's got 4 electrons. Each one of the orbital, it needs electrons. It's going to overlap with some other atoms orbitals. ठीक है. तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो किसी एटम से खींचेगा, इधर खींचेगा. So it needs 4 electrons, right? From 4 other atoms. Now this is carbon's hybridization. It's the 3 types of hybridization. One of them is sp3. अच्छा, sp3 में क्या होता है? sp3 में what happens is you got a carbon atom and all 4 of its electrons. Remember, it's open as it's got 4 electrons, 4 orbitals. So all 4 of its orbitals, they get pulled in different directions. All 4 of them. And this is CH4 में होता है. ठीक है. One example is CH4. So all 4 of them, they get pulled in different directions and they change their shape. So charo orbitals. Remember, carbon के पास 4 electrons है. ठीक है. So 1 electron gets pulled by hydrogen over here. 1 electron gets pulled over here. 1 electron gets pulled over here. 1 electron gets pulled over here. तो इसकी जो orbitals की जो shape है ना, वो change हो जाती है. It actually looks like this. Okay, carbon's 1 electron gets pulled upwards. Who's pulling it? Hydrogen is pulling it. Okay, 1 electron gets pulled in this direction. 1 electron gets pulled in this direction. Okay, 1 electron, tetrahedral shape है. ठीक है. 1 electron gets pulled in this direction. ठीक है. और इनको pull कौन कर रहा है? It's hydrogen atoms that are pulling the electrons. ठीक है. So hydrogen atom comes in and starts to overlap with. So it starts to overlap. ठीक है. तो ये आइडिया क्लियर है कि कार्बन, अच्छा, so the shape of the orbitals has changed. The S was a spherical orbital. The electron was located in a spherical region, but a hydrogen atom came in and that hydrogen atom started pulling the electrons upwards. So वो जो spherical orbital था ना, उसका electron, it got attracted and its electron density got pulled towards hydrogen. Is this point clear कि वो जो आपका S था ना spherical, it's no longer spherical? Is that clear? जी सर, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन से तो रिलेटेड नहीं है ना चीज? सर. मैं कह रहा हूँ ये तो हाइब्रिडाइजेशन से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एस और एस ऑर्बिटल बनेगा इसके बाद. नहीं, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहले तो ये क्लियर हो गया ना, शेप चेंज हो गया ना, कि वो जो S spherical था ना, उसका जी सर, इलेक्ट्रॉन. वो तो है. अच्छा, फिर 2px था, that was double shape, दो lobes होते थे, but hydrogen started pulling the electron, so the electron got attracted to one side, right? 2py का electron था, that got attracted to another hydrogen atom. 2pz electron, it started overlapping with another one. So what has happened is, okay, the S and the px and the py and the pz, they've all changed shape. तो आपके जो orbitals है ना, they don't look like S, they don't look like P. These are known as sp3 hybrid orbitals. They all look identical. तो आप उन orbitals को ना नया नाम दे देते हो, because they don't look like an S, they don't look like a px, they don't look like a py. ठीक है. You start calling them sp3 hybrid orbitals. यानी orbitals तो वही हैं, it's the same orbitals, but now you're going to give them new names. So this one is sp3, this one is also sp3, this one is also sp3, and this one over here is also sp3. सारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, sp3 बस नाम है. You just gave them all a different name. और उन सारों को ना, you started calling them sp3 hybrid orbitals. ठीक है. They all ended up changing the shape.
तो आइडिया क्लियर है कि आपके जो ओरिजिनल ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप शक्ल चेंज हो गई है. इज दैट क्लियर? जी सर, लेकिन वो ऐसे ना ऐसा ऑर्बिटल का तो जो ओवरलैप होता है इसको तो हम सिर्फ नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ना, ये भी तो उसको हम sp3 कह रहे हैं. नहीं, वो भी सिग्मा बॉन्ड ही है, लेकिन अब वो उसका हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया ना, क्योंकि अगर मैं वापस जाऊं ना, ये वाला, इसकी बात कर रहे हो ना. अच्छा, ये ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा था ना. तो मतलब बॉन्डिंग के टाइम पे अब इसकी शक्ल एस पी पी ऑर्बिटल जैसी है कि नहीं है? नहीं है ना. जी सर. इसको अगर तुम पी ऑर्बिटल कहोगे तो गलत कहोगे, क्योंकि उसकी शक्ल पी ऑर्बिटल से मिल ही नहीं रही. जी सर, तो लेकिन ये तो p और s के दरम्यान है. तो पी और एस का ओवरलैप ही है, लेकिन शक्ल चेंज हो गई है ना उसकी. और वो जी सर, लेकिन s और f और है वहाँ. क्या चीज? सर मैं कह रहा हूँ वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान तो वो s एंड s हो रहा है ना. नहीं, मैं पहले तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एस और पी ओवरलैप था ना, इसकी तो बात कर रहे हो ना, या चलो एस एन एस ओवरलैप ठीक है. मुझे खाली बता दो कि ये एस ऑर्बिटल था और ये एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा था, राइट? जी सर. ओवरलैप करने के बाद बॉन्डिंग के टाइम पे इनकी दोनों की शक्लें चेंज हो गई है ना. जी सर. तो अगर मैं इस वाले ऑर्बिटल को एस कहूंगा और इस वाले ऑर्बिटल को एस कहूंगा तो मैं गलत कहूंगा, एस तो स्फेरिकल होता है. जी सर. तो मैं उनको एक नया नाम दे दूंगा. ठीक है. ओके सर. तो है तो वही बेसिकली, जैसा ये वाला है ना, बस उसको नाम में हमने चेंज कर दिया कि उसकी शक्ल चेंज हो गई है. तो ओके सर. ये वाला हाइड्रोजन जो ओवरलैपिंग हो रही थी, दैट वाज एन एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद एस ऑर्बिटल फ्रॉम हाइड्रोजन, राइट? लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हुआ फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा है, तो उसकी शक्ल चेंज हो गई है. सो आई स्टार्टेड कॉलिंग इट विद अ डिफरेंट नेम, दैट्स एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो हम अब थोड़ा जी सर. डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है? तो बस उसका नाम चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एन, सो दिस विल नॉट बी एन sp3 and s, it's not going to be an sns overlap, it's going to be an sp3 s overlap. जी सर. बल्कि वो ड्रॉ भी कर लेते हैं उसको, हाइड्रोजन को भी बीच में ले आते हैं. तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा ना, दैट्स अच्छा, हाइड्रोजन का एटम तो स्फेरिकल था, तो स्फेयर बना लेते हैं इसे रेड. अच्छा, दैट्स व्हाट अ हाइड्रोजन वुड लुक लाइक, ठीक है? और यहाँ पे भी, अच्छा, हाइड्रोजन स्फेरिकल था, हाइड्रोजन जो था वो स्फेरिकल था, एंड द हाइड्रोजन वाज स्फेरिकल. और यहाँ पे भी स्फेरिकल हाइड्रोजन, राइट? अच्छा, मैंने गलत वाले के साथ कर लिया, ऊपर वाले के साथ. चलो, हाइड्रोजन के एटम्स आ गए, राइट? एंड देयर ओवरलैपिंग, राइट? हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन, सो दे गोना ओवरलैप. ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, ठीक है? So now this is going to be an sp3 and s overlap. सिर्फ नाम चेंज कर दिया बस, ठीक है? ओके सर. ठीक है. सेम ओवर हियर कि यहाँ पे ना इट्स, अब ये कोई p ऑर्बिटल होगा कार्बन का जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है? दिस इज अनदर. तो ये सारे sp3s ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है? एंड जी सर. तो बस इसकी शक्ल याद रखिए, इसका बस वो लिख लेते हैं, sp3 hybridization. It's always when does it happen? When carbon makes four single bonds, ठीक है? That's when it happens. या आप कह सकते हो नो पाई बॉन्ड्स, ज्यादा बेहतर है. Secondly, it's going to happen when क्या टेट्राहेड्रल है और 109.5 एंगल्स हैं, 109.5 डिग्री एंगल्स होंगे, ठीक है? तो चले, ठीक है, ये sp2 sp रह गया, वो फिर कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके सर. चले, ओके, ठीक है, हाफिज. सर इसका लेक्चर आप प्लीज शेयर कर. मैं वो सारे करता हूँ अभी, ठीक है? ये
उस पर अपलोड हो जाए